So I called up my dad. So Calcutta mein, so we had a land phone there at that time. So and told him कि हाँ मेरी I got a placement. So he was happy of course. कि अच्छा very good. तो salary कितनी है? So I told him कि 12,500 salary है. So 12,500 was what I got as a starting salary. तो ऐसे अच्छा 12,500 है. So and company ये दे रही है ना, they are giving you accommodation, right? तो I said नहीं, there is no accommodation, मतलब प्राइवेट में कोई ऐसा घर वर देता नहीं है. तो I said कि ठीक है, मतलब तो then you will be getting an HRA, right, house rent allowance. I said नहीं, ये 12,500 ही है हाथ में. So there is nothing else in addition to this. कहते HRA भी नहीं है and you are not getting a quarter also. I said no. तो he says कि तेरे से अच्छा तो मेरा ड्राइवर कमाता है. So वो 10th पास है, मेरा जीप चलाता है, उसकी सैलरी तेरे से ज्यादा है और उसको क्वार्टर भी मिला हुआ है. Hello guys and welcome to the yet another episode of Entrepreneur Talks by the Spotlight India. और आज हमारे साथ है रतुल लहरी जो को-फाउंडर है पर्पल रिबन के. पर्पल रिबन इज़ अ स्टार्टअप फॉर कैंसर पेशेंट्स. जैसे कि आप जानते ही हो कि कैंसर की जो रेट है वो दिन ब दिन इंडिया में बढ़ती ही जा रही है और कैंसर एक काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है. पर उससे भी ज़्यादा जो कैंसर की ट्रीटमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है फॉर अ नॉर्मल इंडियन गाय. वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते कैंसर की ट्रीटमेंट और इसकी वजह से वो स्किप कर देते हैं उस ट्रीटमेंट पार्ट को. बट ये दोनों प्रॉब्लम से भी सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है कैंसर ट्रीटमेंट के एक्सेसिबिलिटी की. अगर आप छोटे शहर में जाओगे इंडिया में तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कैंसर की कोई हॉस्पिटल्स या डे केयर सेंटर्स उपलब्ध ही नहीं है. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है पर्पल रिबन और रतुल लहरी. रतुल का ये दूसरा स्टार्टअप है. उसके पहले उन्होंने प्लेटिनम 1 की शुरुआत की थी जो एक आज पब्लिक लिस्टेड कंपनी है ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो इस एपिसोड में हमने रतुल की एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, एंड ही इज़ इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर मोर देन 20-25 ईयर्स. तो हमने उस टॉपिक के ऊपर भी बहुत सारी डिस्कशन की है कि क्यों सेल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन बिजनेस और क्यों एक फाउंडर को सेल्स स्किल्स डेवलप करनी चाहिए. एंड लास्टली, now we are available on all the major audio platforms, so just go and search Entrepreneur Talks by the Spotlight India and you will find the audio version of this podcast. So without wasting any further time, this is Ratul Lahiri on Entrepreneur Talks. Hi Ratul, how are you? Good morning Utsav, I am doing great and good morning to everyone who is watching this. शुरू से शुरुआत करते हैं. लाइक आप कहाँ, आपको born and brought up कहाँ पे हुआ, then what's the story? Well, okay, so I'm born in Kolkata, Okay. but surprisingly or the surprising fact is that in my entire lifetime I stayed in Kolkata only for 3 years. So my father was in defense. So क्या था कि उनकी so we have been brought in various places because of his transferable job. So 2-3 साल in multiple places, and I've studied in Kendra Vidyalaya because of that background. So I've only stayed in Kolkata during my graduation days. So those 3 years of my graduation I've been in Kolkata, and then again after graduation I moved out to do my MBA to Delhi. So yeah, so that's my short background. But I think it's the school life has been very interesting because 2-3 साल बाद new places, new friends. So yeah, so that's the background that I have been brought up. राइट. अब लाइक ये ना काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है जब भी कोई मिलिट्री बैकग्राउंड से एक बच्चा जो मिलिट्री बैकग्राउंड में रेज हो रहा है, उनके पापा का ट्रांसफर होता जा रहा है. सो आई हैव फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जिनका सेम बैकग्राउंड है, पर उनका ना कॉलेज के अंदर मैंने उनसे बात की थी तो दे हैव दिस वेरी कंसर्न. उसने बहुत है ना ऐसे उसने हवा में बोल दिया वो चीज की. उसने बोला कि यार पर दोस्त नहीं बन पाते अच्छी तरीके से बिकॉज आई एम मूविंग आउट ऑफ प्लेस. मैं राजस्थान में था 2-3 साल, फिर उसके बाद मैं दिल्ली साइड पे था, फिर उसने बोला कि कोई वहाँ पे था, एंड देन आई एम राइट नाउ इन गुजरात. तो उसने बोला कि दोस्त नहीं बन पाते. मैं हर 2-3 साल में चेंज करता हूँ, मतलब ट्राई करता हूँ कि रख सकते हैं, क्योंकि जब मेरी स्कूलिंग खत्म हुई 2016 के अंदर, तो उसके पहले तो क्या है कि फेसबुक और वो सब तो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे, उतना ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि 1 GB है ये. तो आपका ऐसा ही है कुछ कि आपका टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है इसके अंदर?
So I think there are pros and cons of both. I mean, मेरा जो schooling था, that was much before when Facebook was there and mobile भी नहीं थे तब तो. So I passed out my 12th in 1998. Oh, Okay, so so I'm right now 44. So हाँ, 1998 में मैंने 12th पास की. तो उस टाइम तो they were like, of course, no mobile. It was only landline, and वो landline भी limited लोगों के पास होती थी. So the privileged class used to have landline at home. But so yeah, I think I used to look it up to a point ki was excited. Of course, there was a sorrow when used to dad की transfer होती थी कि जो अच्छे दोस्त थे वो फिर छूट जाते थे. Okay, but there was also an excitement कि नए दोस्त बनेंगे. हाँ, So we get to meet new friends and new locations. So more than friends, actually क्या था कि we were used to that shift. So वो 2-2 साल 3-3 साल में ट्रांसफर होना था, तो वो we were used to it. So it was part of life, and वो अलग से कभी सोचा नहीं कि अच्छा ये दोस्त छूट रहे हैं. तो so that was it. But I think surprisingly, and the good part of this social media and then mobile से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा because नंबर फिर भी नहीं मिले थे. But after हाँ, Facebook came in, I mean, right now we have WhatsApp group of my class second के friends से लेके of course 11th 12th के friends तक. So we have like I have 3-4 different WhatsApp group of my school friends now. right. So So कहीं ना this कहीं is connect हो गए, and so हाँ, I think that is a great part. So I think from that perspective, I possibly feel it better than staying in one place. Okay, because I have friends, I have more friends than somebody who's stick to one place. हाँ, हाँ, ये भी बात सही है. तो दिस इज द अपसाइड ऑफ आपका ट्रांसफर होता रहा वो वाली चीज. और क्या चीज सीखी और क्या चीज, बिकॉज इसको एक अनयूजुअल साइड में अपब्रिंगिंग बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ये फेस नहीं करते हैं कि दे आर मूविंग आउट ऑफ प्लेसेस, दे आर मूविंग प्लेसेस, वो भी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर. ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट के अंदर आप दूसरे दूसरे सिटीज में जा रहे हो, यू आर मूविंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑल टुगेदर. Correct. तो उसके और क्या बेनिफिट्स आपको मिले, या तो फिर डाउन साइड ऑफ इट? I think the benefit of what I now realize is that it has given me the sense of or the discipline of being independent from very beginning. So I'll give you this. ये मैं काफी बताता रहता हूँ लोग मेरे दोस्तों को भी जो आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है. So डैड की जब ट्रांसफर होती थी, ट्रांसफर कभी भी होती थी मिड टर्म, मतलब स्कूल का हाफ ईयरली खत्म हुआ और ट्रांसफर आ गया डैड का. हाँ, सो नए जगह पे गए, एंड वो पुराने स्कूल से टीसी लेके आता था, ट्रांसफर सर्टिफिकेट. एंड आर रेगुलर दिस थिंग इज दैट डैड नहीं आते थे नए स्कूल में एडमिशन कराने के लिए. मैं खुद ही इवन व्हेन आई वाज इन क्लास 5th 6th, तब से लेके मुझे याद है कि वो टीसी मैं खुद हाथ में लेके स्कूल में चला जाता था. वेंट इनसाइड द एडमिशन ऑफिस इन द स्कूल कि सर मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ है, ये मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, मुझे एडमिशन लेना है. सो टू टेक एन एडमिशन इन अ न्यू स्कूल आई हैव गॉन अलोन. एंड तो सेट रूल था, तो स्कूल में भी पता था कि अच्छा ये लोग ऐसे ही मतलब ट्रांसफर हुआ डैड का. तो फॉर्मेलिटीज करा लेते थे, 15 रुपए फीस था. सो फीस पे कर देता था डैड, 15 रुपए पॉकेट में डाल के भेज देते थे टीसी लेके कि जाके एडमिशन करा ले अपना. So I think that was something of today's generation can't even think of, or या, possibly in a private setup they can't think of कि अच्छा खुद जाके नए स्कूल में एडमिशन ले लो at a 6th 7th standard level. Okay. हाँ, Other thing I would also want to highlight, जब डैड की ट्रांसफर होती थी तो वो ट्रक लोड करके सामान जाता था. तो पूरा वो ट्रक तो अपने को बाहर से प्राइवेट ट्रक जो होते हैं, तब वो मूवर्स पैकर्स वाला फंडा भी नहीं था. सो वो हाँ, अलग से ट्रक वाले को बुलाओ कि हमें यहाँ से इधर से उधर शिफ्ट करना है. तो आई रिमेम्बर दैट माय अंकल यूज्ड टू कम फ्रॉम आवर होम टाउन. सो ही वाज इन अ सिविल जॉब. तो वो छुट्टी लेके आते थे ट्रांसफर कराने के लिए, शिफ्टिंग कराने के लिए. तो हाँ. डैड मॉम और मेरे भाई ट्रेन में ट्रैवल करते थे जब शिफ्टिंग होती थी, एंड वो ट्रक में मैं और मेरे अंकल जाते थे. सो आई हैव लाइक फ्रॉम माय 6th standard आई हैव डन ओवरनाइट ट्रैवल्स ऑन द हाईवे, ट्रक में ड्राइवर का पीछे वाला सीट में बैठ के. सो दोज वर द फन डेज. बट आई थिंक दैट दोज आई थिंक आर pretty added pretty much strong points which added to the confidence and being independent what I am today. Right, right. This is fascinating. For what were some of those things that you learned from your father? So I think what my dad used to do, I remember he had a very small examples that I can pick up. उनकी स्कूटर थी एक.
शुरू में लैम्ब्रेटा थी, फिर बाद में उन्होंने वेस्पा खरीदी. आई ऑल्सो हैड अ यंगर ब्रदर, तो बीच में बैठता था, मॉम फिर पीछे. लाइक यू सी अ लॉट ऑफ दिस. हाँ, किया हुआ है मैंने. हाँ, राइट, एग्जैक्टली. तो सामने खड़ा होता था, तो तब मतलब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड, सेकंड थर्ड, तब मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हॉर्न बजाने की. सो सामने स्कूटर में मतलब, एंड देन डैड हैज टोल्ड मी डायरेक्शंस टिपिकली कि कब बजाना है कब नहीं बजाना है. सो ही यूज्ड टू स्कूल मी, अरे आपको तो शुरू शुरू में क्या बिंदास मस्ती में हॉर्न बजाओ. एंड देन ही स्कोल्डेड मी कि अरे क्यों बजा रहा है, मतलब व्हाट वाज द रीजन फॉर इट. फिर मैंने डैड से थोड़ा बड़ा हुआ, 9th 10th में आया, तो मैंने जिद की कि आई वांट टू राइड द स्कूटर, मुझे चलानी है. तो उन्होंने पहले मुझे मतलब काम दिया, सुबह जब डैड ऑफिस जा रहे थे मुझे किक मार के स्टार्ट करना पड़ता था. तो सुबह उठ के स्कूटर धोना पड़ता था. फर्स्ट आई टू पूरा स्कूटर धो, केक मार के स्टार्ट करो, और डैड के लिए स्टार्ट की हुई स्कूटर रेडी रखो. एंड फिर वंस ही कम बैक, तो फिर वो आई हैव टू, मतलब वो छोड़ देते थे बाहर, मुझे वो स्टैंड से उतार के फिर घर के पार्किंग तक घुसाना होता था. सो दैट आई डिड फॉर 1 year काइंड ऑफ थिंग, कि स्कूटर बैक. तो मुझे समझा बाद में कि ही वाज डूइंग इट सो दैट आई कैन बैलेंस द स्कूटर, बिकॉज इट वाज हेवी, इट वाज अ लैम्ब्रेटा, सो काफी हेवी था. एंड ऑल्सो कहीं हम लोग समझो बाहर घूमने जा रहे हैं, इन या होम टाउन आते थे, सो ही यूज्ड टू पे मी, गिव मी द मनी फॉर द रेलवे टिकट. एंड मुझे वो आधे घंटे पहले भेज देते थे कि स्टेशन जाओ, टिकट खरीद के रुके खड़े रहे. सो आई यूज्ड टू गो स्टैंड इन द क्यू एंड बाय टिकट फ्रॉम द रेलवे टिकट काउंटर. एंड यूज्ड टू स्टैंड, एंड मैं जाता, वो भेजते भी थे साथ में, मुझे एक सूट के साथ में पकड़ा देते थे, सो दैट एक लगेज तो चला जाए साथ में. So all those, I think, I now realize, are I don't see today, any of the parents would think of doing that with their kids. But those are the things that made me pretty confident from a very young age. राइट. ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि आपके पापा ने आपको ऑलवेज डिस्कम्फर्ट वाले साइड पे ही पुश किया है कि डिस्कम्फर्ट आएगा पहले, पर यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड रोज भी अनकंफर्टेबल ही होता है अगर हम देखें. Yeah, correct. I think one is that he pushed me to a lot of those hardships, if I say so, from a very young age. हाँ. Also, he instilled on me the sense of how to bring equality, even if, for example, if between unequals. So it's a very humorous example. तो शुरू में ना, जब बचपन में हमें माय फेवरेट वाज लाइक दाल चावल एंड एग, बॉइल्ड एग. ओके. एंड फॉर वॉट एवर रीजन आई डोंट नो, वो बचपन में अंडा ना आधा मिलता था. वी नेवर यूज्ड टू गेट अ फुल एग. मतलब वो संडे को काफी, मतलब मम्मी को बटर लगाओ तो एक फुल एग मिलता था, अदरवाइज यूज्ड टू गेट हाफ एग. एंड एज आई सेड, आई मीन मेरी वी आर टू ब्रदर्स, सो माय यंगर ब्रदर इज 5 years 6 year older younger to me. तो अंडा वो आधा आधा होता था बिटवीन मी एंड माय ब्रदर. एंड वो अंडा ना हाफ करने की जिम्मेदारी मेरी होती थी. सो मॉम यूज टू गिव मी वो कपड़े सिलने का थ्रेड, तो उससे बीच में से करके आधा करना होता था, राइट. एंड बोथ ऑफ अस वर वेरी फॉन्ड ऑफ एग्स, सो वो आधा करता था. तो मैं जनरली शुरू में क्या करता था कि जो, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट 50-50, तो जो भी 60 वाला पोर्शन था आई यूज टू टेक इट, कि यार ये बड़ा पोर्शन है, इसमें योग का पोर्शन ज्यादा है, व्हिच आई टेक. So then invariably what used to happen is that दोपहर में खाना खाने बैठते थे, सब एक साथ होते थे. तो and dad used to give that bigger piece to my brother. So कि नहीं ये उसको जाएगा. So फिर वो धीरे धीरे मैंने लगा कि यार ये तो मतलब दिस इज नाइंसाफी, मैं खुद ही काट रहा हूँ और बड़ा पीस उसको जा रहा है. Somehow I practiced to make it equally. छोटा पीस तो नहीं है मेरे पास, इक्वल तो है. बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज दैट कभी उसके बाद ऐसा प्रैक्टिस बैठ गया, या आई थिंक इट इज बिकम इन माय हैबिट और नेचर, कि कभी गलती से अगर कोई पीस बड़ा हो गया, मैं खुद से भाई को दे देता था. ट्रू, दिस इज ट्रू. ये सब बहुत छोटी छोटी चीज है. आपकी स्टोरीज मुझे बहुत पसंद आ रही है, तो स्टोरीज के स्टोरीज सुनाना, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना, उनको भी स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद है, रादर देन जस्ट प्लेन सिंपल फैक्ट्स और some knowledge, if we say so. So now Right. coming from the childhood, आप like as a student आप कैसे थे? So I was a very studious student. So Okay. normally, I always used to be like within the first, second, third rankers. First बहुत कम आया, but second, third तो आता था बढ़िया. during the entire schooling days. तो काफी पढ़ाकू था मैं. स्कूल खत्म होती है, देन आपने बैचलर्स किस में किया? I did economics honors.
Oh, so you did commerce in 11th, 12th? No. I did science in 11th, 12th. Oh, I okay. did like physics, chemistry, PCM था मेरा. Then I went for my MBA. Then you went for your MBA. Yeah. तो फिर लाइक जब एमबीए खत्म कर दी आपने, तब दिमाग आपका क्या था कि एंटरप्रेन्योरशिप वाज देयर एन ऑप्शन इन योर माइंड कि नहीं, पहले फिर जॉब ही करते हैं एंड फिर देखते हैं कि क्या कहाँ पे लाइफ ले जाती है, वही था? So, a very interesting thing that happened and that has, changed the course of my decision of my career is when Mandal Commission came in. Okay. So, I think I was in school that time. I was in ninth or 10th, जब Mandal Commission आया. I think 94, 95 की बात है. And I have seen, because my dad was expecting his next promotion the next year. Okay. And sarkari naukri mein kya hota hai, promotion comes after 10 12 years. It is not like the way it happens in private or corporate, like har saal promotion hai, har 2 saal promotion. And then this Mandal Commission came in, and he got pushed back by another 10 years because wo pura, another set of people through, because of that, quota, so they came above him. Okay. So I have seen the frustration, the kind of discussions between my dad, his friend circle, colleagues, so somehow that has impacted me very, very strongly that मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी. Okay. So, that time when I was in class 9th and 10th, I kind of got determined ki I want to work in a place jahan pe my promotion and my moving upward is not decided by some policy, but by my own hard work and effort. So that has, like, so tab se maine ye kiya tha ki mujhe I want to get into a private job. Pressure again from my parents, or especially from my dad, because mom was cool. Okay, she was a housewife, she's pretty cool. सो डैड का था कि यार, मतलब अच्छा तो चल, इंजीनियरिंग नहीं हुआ ना, अभी तूने इकोनॉमिक्स में क्रैक मारा, अभी आईएएस के लिए प्रिपेयर कर. सो आई सेड नो बॉस, मुझे एमबीए करना. सो एंड so that's again, like, another battle happened at home, between me and my dad, which says कि I'm not funding any of your MBA. तुझे अपने से करना है तो कर, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मतलब don't expect any money from me. So I think, coming back to your question, after my MBA, I think the funny thing, I'll just want to, I think this is another interesting thing that happened. So when I got my campus placement and I got into a company called Net4, which is an IT company, and it was a startup at that time in 2001. Okay. So, I was, again फिर वो मोबाइल वगैरह नहीं था, तो there was this STD booths हुए करते थे, तो वहाँ पे नीचे कॉइन डाल के फोन करना था. So I called up my dad, तो Calcutta में, so we had a land phone there at that time. So and told him कि हाँ मेरी, I got a placement. So he was happy, of course, कि अच्छा, very good. तो सैलरी कितनी है? तो I told him कि 12,500 सैलरी है. So 12,500 was what I got as a starting salary. तो ऐसे अच्छा 12,500 है. So and company ये दे रही है ना, they are giving you accommodation, right? So I said नहीं, there is no accommodation, मतलब प्राइवेट में कोई ऐसा घर वर देता नहीं है. तो he says कि ठीक है, मतलब तो then you will be getting an HRA, right, house rent allowance. I said नहीं, ये 12,500 ही है हाथ में. So there is nothing else in addition to this. कहते HRA भी नहीं है and you are not getting a quarter also. I said no. तो he says कि तेरे से अच्छा तो मेरा ड्राइवर कमाता है. So वो 10th पास है, मेरा जीप चलाता है, उसकी सैलरी तेरे से ज्यादा है और उसको क्वार्टर भी मिला हुआ है. So that's what, what was your reaction then? No, I was like speechless कि क्या बोलूं उनको. I like all my excitement of trying to tell him कि I got a job, campus placement मिल गई, वो सब कुछ चला and गया. वो सब like पानी में in a minute. मेरा ड्राइवर My कमाता है dad is ज्यादा like, तेरे से. हाँ, लाइक मेरा प्राइवेट दे रहा है और उसको ऊपर से उसको लाइक सरकारी क्वार्टर भी मिला हुआ है, मतलब तू क्या कर रहा है 12,500, मतलब 2.5 लाख रुपए खर्च किए और 12,500 रुपए, लाइक ही वाज कैलकुलेटिंग प्योरली आरओआई, जैसे हम लोग अभी स्टार्टअप में करते हैं. क्या कंप्लीटली. या सो लाइक फिर ये हुआ, आपने फिर नेट फॉर इंडिया, योर स्टिंट देयर वाज अराउंड 3.5 years, then you moved to 3 years. Tech Pacific,
Then you moved to Yeah. ICICI Prudential. ICICI Prudential also was a long stint, 3.5 Yeah. years, same. Yeah. And then you started Platinum. तो क्या चेंजेस आए मार्केटिंग? तो आप जैसे सेल्स गए, क्योंकि सेल्स इज अ डिफरेंट फिनोमेना. इंडिया में बहुत ज्यादा लोग सेल्स से दूर भागते हैं, बट सेल्स करना चाहिए मेरे हिसाब से. तो सेल्स आपने चेंज क्या है, आपको क्या एडजस्टमेंट करने पड़े? I think no. So I again, as I said, now somewhere my that jid helped me throughout. Okay. I think the first change, of course, is a physical thing because I shifted to Bombay in my own budget. I got a house in Vashi. Okay, and my office used to be in Worli. So from a place in Delhi where it was comfortable for me to travel, like bike थी, तो घर से office was like 5 minutes 10 minutes bike से पहुंच जाता था. Bombay में आया, then the physical, the entire effort became like 100 times and not 10 times. And never ever had traveled in local train उसके पहले. So वाशी से कुर्ला ट्रेन आके चेंज करो, फिर कुर्ला से दादर एक बार ट्रेन चेंज करो, एंड दादर से फिर जाके द नेक्स्ट करी रोड या कहीं that other station that we used to get down where we used to get a share cab for my office. So 3 बार train change करके and we used to reach office, and so that was, and then of course sales में निकलता था, it was all train and all. So I think there was those were the days of the entire, when you say ना कि रगड़ लो शुरू के career में. So I did all of it, so, and which is of course common. I'll not highlight कि अच्छा बहुत मैंने तीर मारा, but of course gone through the grind. So I think in sales, then what I started enjoying is when I started cracking the deals. Okay, so that is, I think, is somewhere, because marketing mein na, there was no fun. Ad डाल रहे हो पेपर में, ये कर रहे हो, there is no sense of closing or achievement that you get. And I'll give you this example. My biggest closure in sales in Net4 was TCS. Okay. Tell me the story. कैसे हुआ वो चीज? Yeah. So this is an interesting story. Definitely, I would want to share. So TCS में क्या हुआ? I somehow got the connect with this gentleman, Mr. Bimal. I forgot his surname. So he's a Bengali. Okay. So, and he's the IT consultant for TCS. Basically, he's a retired VSNL guy. Okay. And TCS ने उनको consultant हिसाब से रखा हुआ था full time. And he used to decide all the communication, decision making for TCS. So I went and met him. तो मैंने जाके बोला कि सर, this is what Net4 India does, and मैं VOIP बेचता हूँ, और आपकी जितने offshore clients है TCS के, आपकी जितने बाहर के, so this will help you in saving cost. Okay. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, आप परसों आओ. Okay, so come and meet me day after tomorrow. मैं 2 दिन बाद गया, बैठा के रखा. He used to, like, of course, being at that level, very senior level, उनकी मैं उनके केबिन में जाके सोफा में कोने में बैठा रहता. उनके वो कंटिन्यूअस his colleagues used to come for some work or other, and मुझे बैठा के रखते थे. तो मैं, फिर उन्होंने बोला कि रातुल आज लेट हो गया, आप एक काम करो, नेक्स्ट वीक फोन करके आओ. ओके. सो ऐसा 2-3 हफ्ता मुझे घुमाया, नो डिस्कशन. आई यूज्ड टू जस्ट गो देयर, सेट. कभी कभार मैं खुद फोन करता था कि मेरा क्या था कि उस टाइम कि यार ये मुझे हुक मिला है तो इसको छोड़ना नहीं है. ओके. समवेयर आई यूज्ड टू कॉल हिम कि सर मैं उधर आ रहा हूँ, एक दूसरा मीटिंग है, तो आपसे आके जस्ट मिलना था. हाय, कहता हाँ आ जाओ, चाय पी के जा. सो समवेयर दैट स्मॉल बॉन्डिंग स्टार्टेड हैपनिंग. एंड आफ्टर अ वाइल उसका इमीडिएटली 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद वो दुर्गा पूजा था. ओके. एंड one day he told me कि रातुल, आई वांट अ हेल्प, तो तुझे ना दुर्गा पूजा का चंदा लेके आना है. सो ही वाज पार्ट ऑफ सम दुर्गा पूजा कमिटी. ही सेज कि मेरा मुझे ये चंदा इकट्ठा करना है, तो कैन यू हेल्प मी. मैंने कहा सर मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब आई डोंट हैव नेटवर्क कि मैं किसी से जाके चंदा मांगू दुर्गा पूजा के लिए. आप मुझे कुछ भी काम करा लो, मैं मेरा जहाँ पे मैं कर सकूं. बोलते नहीं तेरे को जाके किसी से मांगना नहीं है, मेरे नेटवर्क है, मैं उनसे फोन करके उनको, तेरे को जाके खाली उनसे कलेक्ट करना है पैसा. सो ऐसे ठीक है सर. सो ही देन यूज मी लाइक अ पियोन टिपिकली. ओके. सो फोन करता था, फोन करके ही विल से कि रातुल, मेरा एक बंदा आ रहा है, रातुल आ रहा है, वो आके आपसे पैसा ले लेगा एंड आपको रिसीट दे देगा. So for like, for next 15-20 days or 1 month, I did that chanda collection for him. And then puja khatam hua. He gave me the PO, which is the biggest ever purchase order for Net4 at that point of time. So
So then I realized that, boss, this is what, it is like, if you are in sales, it is not like, you don't sell a product, you sell yourself. Right. And you have to invest in people. You have to invest in people, you have to invest in people without expecting anything in return. वो return automatic आता है. That is, Empathy I के think, साथ. that exactly, you have to do it with empathy. You have to really go out of your way and help the person. I think what is greatly missing today, when I see a lot of people sending a LinkedIn connect today, and the moment I accept it, immediately uska sales pitch aa jata hai. Okay, and then I remove him from my link. And I tell this to my team now when I'm, I have a team for business development. I say that, boss, when you're going and talking to your client, talk about anything under the sun except for business. Okay, business की बात मत कर, business वो देगा, you don't have to ask. So that is what I think is something, and therefore I feel that everyone has to go, and everyone is doing sales. Anyone who is a relationship guy is a sales guy. You just need to know, when you are in sales, you just need to know basically, that you need to pick up the cues ki acha, where you need to strike the goal. राइट ना अभी मुझे आपसे पूछना है बिकॉज लाइक मोर और लेस आपका पूरा करियर सेल्स मार्केटिंग में ही रहा है बिकॉज यू आर हैंडलिंग सेल्स इन पर्पल रिबन आल्सो प्लैटिनम वन में भी बिजनेस स्ट्रेटजी बिजनेस डेवलपमेंट में थे सो आई हैव टू क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट मेक्स अ गुड सेल्स पर्सन कि सेल्स जो कर रहा है वो सेल्स बंदा कौन अच्छा होता है एंड सेकंड इज व्हाट मेक्स गुड सेल्स मैनेजर और सेल्स लीडर I think a good salesperson is somebody who understands the customer. Okay. All my deals, what I could crack till now is not by, trying to sell what I have, but trying to fulfill what he doesn't have. Deep. Can you go deeper on this? Yeah. So I'll, somewhere, I'll tell you what, I'll just give you some, here and there tidbit examples. There are so many deals, or in my BPO business in Platinum One. Okay, there are clients who came back कि मुझे outsource करना है telecalling, where I realized that he really doesn't need to outsource. वो खुद कर सकते हैं. So I then kind of given them that feedback, boss, ये outsource नहीं करना है. You will get more productivity if you do it in house. Okay, and since that you don't understand this business, I will help you to set it up pro bono. Okay, तो मैं आपको गाइड करता हूँ. आई विल कनेक्ट यू विद द राइट वेंडर्स. CRM कहाँ से लेना है, सॉफ्टवेयर कहाँ से लेना है, पीसी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना है, किस तरह के बंदे हायर करने हैं, उसको ट्रेनिंग क्या करना है. आई विल गिव यू एवरीथिंग. आई विल गाइड यू ऑन दैट. But I think it is not wise to outsource this to any BPO for that matter. And that guy was like, but क्यों नहीं लेना चाहते? मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लेना चाहता. I would love to take it, but I think it is not worthwhile for you to outsource this, because you will be spending more money. Number one, because I of course will also add, apart from all this cost. और आपके पास अगर ऑफिस में जगह है, आप आराम से बैठा सकते हो. मुझे 6 दिन बाद या 15 दिन बाद I got a call from another client, a big client, saying that I got your reference from this guy and we want to outsource. He said that you are the right person to do it. So that is, I think, is very critical to understand the client. And that's why I said that, you don't, sell what you have, you give him what he doesn't have. Okay. And as I said, it is very important to keep your business, interest aside. You have to win that person. Okay. And specifically, this is important, very, very important when you are in B2B sales. B2C में you have to close. Okay, वहाँ पे फिर relationship काम नहीं आता, because वो customer दोबारा आएगा नहीं आएगा. So let me clarify. This is the funda I believe is for B2B only. I mean, you cannot make friends for life when you are in B2C sale, because वो T20 match है. Okay. So यहाँ पे you get you invest long, you invest in that person, and you get return manifold out of that. Like, or what makes a good sales leader? I think, we always say, or we always hear, there is a carrot and stick approach in managing a team, right? या तो डंडा मारो या प्यार से काम करो. I think somewhere, always it works. It doesn't work like that. It is not that,
black and white always ki, and we have always seen in corporate that या तो there are bosses जो डंडे से ही काम चलाता है, okay, and there are always bosses जो प्यार मोहब्बत से ही काम चलाता है, but उसका क्या है कि there is some time he falters because हमेशा काफी time that प्यार मोहब्बत वाले bosses are taken for granted. तो उसके ऊपर जब प्रेशर आता है ना, वो प्रेशर पास नहीं कर पाता बिकॉज ही देन कांट ऑल ऑफ अ सडन मेक डंडा कि भाई मुझे ये करके दे, ये टारगेट है, ये वो करके, बिकॉज वो तब भी प्यार से ही बात करता है कि बॉस प्लीज कर दे यार, नहीं तो मतलब मेरी जॉब चली जाएगी, तेरी भी जाएगी टाइप. सो यू नो a lot of time it doesn't work because you when you're managing a team you get all sorts of people, right? So किसी को डंडा समझता है, किसी को कैरेट समझता है, किसी को दोनों से काम चलता है. So I think a good sales leader is somebody who can maintain a fine balance between these two to understand that किस पे क्या चलेगा. Okay, so you need to manage both. You can't be one-sided as a leader because you are then managing different subsets of people, different quality of people, different types of people. You can't be skewed toward कि मैं तो डंडे से ही काम चलाऊंगा या मैं तो प्यार मोहब्बत भाईचारे से ही काम चलाऊंगा कि भाई कर दे वाला टाइप. So you need to really understand किस पे क्या चलेगा and also कब क्या चलेगा. Number two, I think you have to again make him friend and not a team member. Because जो हम कहते हैं ना, so there is a saying and which is very very apt that one works for the boss and not for the company, right? And when one works for the boss is when he sees you as a friend and not as your boss. True. This is so true. मैंने ना एक पॉडकास्ट किया था, प्रतिलिपि के फाउंडर को जानते हो आप? रंजीत सिंह करके, रंजीत प्रताप सिंह. प्रतिलिपि पता है आपको? प्रतिनिधि. प्रतिलिपि. हाँ, करेक्ट, आई नो. हाँ. तो प्रतिलिपि के फाउंडर रंजीत, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि उनके जो दूसरे जो को फाउंडर है उसमें लेडी नाम था, उनको मैं भूल गया, that she knows when to be a mother to her team and when to be a dictator to her team. Right. And Exactly. there's a thin line between both of them. और ये as a good leader आपको पता होना चाहिए कि कब आपको क्या बनना है, क्योंकि Absolutely. दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी. अगर आप मदरी बनते गए तो लाड़ प्यार में आ जाएंगे, डिक्टेटरी बनते गए then वो टॉक्सिक क्रिएट वर्क कल्चर रहेगा. तो there is a very fine line and thin line between that, so that's cool. अब इतने साल तक आपने 7-8 साल 9 साल तक आपने जॉब की, then what happened, why you decided एंटरप्रेन्योर वाला कीड़ा फिर कब आपने अंदर हुआ कि बॉस अभी खुद का चालू करना है कुछ? So entrepreneur वाला कीड़ा ना दारू पे क्या हुआ basically. So नाइस. बताओ वो दारू पार्टी का सीन बताओ कैसे हुआ? so so it's like me and few of my colleagues including my boss, okay. So we went to have kuch to apna something we have done achieved in office in ICICI Pro, and we all went out to celebrate that, okay. And उसके पहले ना मेरा थोड़ा frustration था of all my appraisals, okay. So normally क्या हुआ, so when I was doing this managing the sales team, and of course there was sales number and targets, and we've achieved every year and overachieved every year, okay. But क्या हुआ, whenever it came to appraisal and then in corporate and HR का फंडा, that bell curve and all, right, वो basically it's वो bell curve is called for a reason. हम लोग मजाक मजाक में करते थे कि finally वो खुद अपना घंटा बजाने के लिए है, so it's not going to do anything. So but what happened is that in the first year I couldn't do the number that I was supposed to do because of some conflict with another leader in the organization who was blocking my way, okay. Right. And both of us were used to report to the same boss, but the sales team थी, जो frontline sales team थी, वो उसको report करती थी pan India. So he was like blocking my access, तो क्योंकि वो insurance का drive करता था, and I used to drive the non-insurance part, so he always like वो अपने team को बोलता था कि यार तुम लोग insurance पे focus करो, वो सब छोड़ो, उससे तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, okay. So I didn't get that support in the first year, तो पहला साल ही था तो उतना buy-in भी नहीं था, so I couldn't crack much, okay. And what has happened is that when the appraisal happened, of course I didn't got the desired rating that I was expecting.
मैंने पूरी मेहनत की, मतलब पूरी जान लगा रही थी उसको सेट करने में. देयर वाज अ गुड बेस व्हिच हैज बीन क्रिएटेड, numbers have started happening. I did all the tie-ups. We had like a very wider portfolio of products that we can go and sell to the client. तो मैंने जब वो अप्रेजल में रेटिंग कम आए तो मैंने अपने बॉस को जाके बोला कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस. ही जस्ट कि बट यू डिडंट डू दिस नंबर. तो मैंने बोला कि बट दिस गाय ब्लॉक मी, राइट. उसने मुझे एक्सेस नहीं दिया. ही यू नो दिस, एंड उसको पता था देयर यूज्ड टू बी अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट. आई हैव लाइक थ्रू आउट द ईयर आई वेंट एंड लाइक एस्केलेटेड इश्यूज एंड ऑल. तो मैंने बोला तो वो उसने नहीं करने दिया मुझे, मतलब मेरी क्या गलती है. कहना बराबर है, इसलिए उसका भी अप्रेजल खराब हुआ. सो देन आई हैड नो आंसर. चल उसकी भी लगी ना, तो अब तू क्या बोलेगा टाइप. तो आई सेड ओके. तो आई हैड नो आंसर. सेकेंड ईयर व्हाट हैपेंड इज दैट एवरीथिंग वेंट फाइन. मतलब देन तब उसको भी समझ गया कि यार इसको सपोर्ट करना पड़ेगा. एंड सेकेंड ईयर आई ओवर अचीव द नंबर, एवरीथिंग हैपेंड. And then second year also, like, a 5 was the best rating and I got 4. I thought, boss, matlab, I thought I'll get 5 this time. So then he says कि नहीं यार, overall ना the department में overall हमारा थोड़ा उतना अच्छा नहीं हुआ. Overall as a vertical we didn't do well. Okay, so जो हमारा insurance का target था वो थोड़ा हमारा short रह गया. So there's no one who's like a 5 rating in the department, in the vertical. यार ये सही है. So I somehow kind of started feeling that मंडल कमीशन वाला आ गया कि यार ये क्या चक्कर कि वापस से. हाँ. सो दैट लाइक आई वाज लाइक यार दिस इज एब्सर्ड कि मैं पहले तो किसी और की वजह से नहीं हो रहा है तो फिर लगी. फिर मैंने किया और मतलब ओवरऑल डिपार्टमेंट की वर्टिकल की नहीं हुई तो फिर भी लगी. देन आई रियलाइज. सो वो फिर देन द थर्ड टर्म देन वी वर सिटिंग इन द ड्रिंक एंड आई. सबने तो ये था कि मतलब देन आवर बॉस स्टार्टेड picked up this discussion कि तुम्हें करना क्या है अपने अपने लाइफ में. व्हाट इज योर लाइक योर ambition in life. So fortunately what happened is that those 4-5 of us were sitting that day on that drink. तो सबका कुछ ना कुछ अपना करने का शौक था. So it just happened that everyone was wondering. So no one said कि मुझे CEO बनना है. So the way I said in my first with my boss कि मुझे CEO बनना है 5 साल में. In that drink no one said कि अपने को CEO बनना है. सबने अपना अपना independent कुछ ना कुछ करना है. Okay. So then it happened over the drink कि यार अगर सबने अपना अपना करना है so let's do it together. Okay. तो अपना बिजनेस शुरू करते हैं. So it happened and that way. So just यार मस्ती मस्ती में दारू पीते हुए हुआ. And then I also थोड़ा 3-4 पैक चढ़ गया तो फिर मतलब वो भड़ास भी निकल आई कि यार ये क्या है बॉस. मतलब कभी तो उसकी वजह से नहीं होता, कभी मतलब डिपार्टमेंट की वजह से नहीं होता अप्रेजल. एंड देन अभी बोलोगे कि हाँ सबने अच्छा किया लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस है तो अभी नहीं होगा. तो मतलब ऐसे तो यू आर नेवर इन कंट्रोल ऑफ योर ओन थिंग. सो दैट इज द रीजन. तो पूछा कि क्यों करना है. सो दैट इज वन फैक्टर व्हिच वाज बिहाइंड माय माइंड दैट I want to take control of my own destiny. Okay. So again, I mean, somewhere that is there in my from my childhood that I don't want to do something which like somebody else is dictating कि इसका क्या आगे होना है type. So that happened, and then on that day we decided कि something like what we can do together because everyone has their own different business ideas. So we thought कि let's start a financial distribution company. Because सब वही कर रहे हैं because as a profession we are good at it whatever we are doing in ICC Prudential. So then we thought let's come together and start a financial distribution company because this is something we can do it together. Okay, so सारे 5 लोग मिलके कर सकते हैं. So that's where the entrepreneurial thing started. Platinum one like bootstrap से चालू किया कि then you guys went for funding? No, so we this entire discussion and Daru wala episode happened in 2007. Okay. And then we did some amount of कि थोड़ा हमने 15-20% इसको एक concrete shape दिया कि करना क्या है, मॉडल क्या है, financials कैसे होना है and all those things. And then my boss what he did is that he said कि ठीक है अगर करना ही है let's move out and do it and let me inform the senior management, CEO वगैरह, MD वगैरह को कि this is what we want to do and we want to step out. So he was an SVP at that time and it's at a very senior role. तो कहते मैं जाके इन्फॉर्म करना पड़ेगा because we need to give some notice to the organization and we have to inform them and we also need possibly support because financial distribution कर रहे हैं. So insurance is a big part, so we need support from iPro. Surprisingly the management was very very supportive and they were like extremely supportive कि ठीक है it's great that you want to do something on your own, we'll completely support you.
you guys take 1 year, you stay in the company. Okay, by the time you hand over, whatever your individual responsibilities are, and then you move out in 2008. 2008, startups are not in fad. वो था ही नहीं, it was not so much in visibility also, and लोगों को था ही नहीं कि startup करना है. So so हमने जाके, and it was very easy to access VCs. Today you have to do a swimsuit competition, all those pitch sessions and all those things. But I was responsible because I'm the more like a relationship guy. So I used to pick up, Google से VCs का number निकालता था, phone करता था, and used to get an easy appointment कि आ जाओ, next week Monday को आ जाओ presentation देने. So then we used to go and give presentations. So fortunately we could, so a lot of VCs have shown interest and positively, and we could sign a term sheet with Sequoia Capital. Oh, so Okay. you raised capital from Sequoia? We didn't. Oh, okay. We didn't. We signed the term sheet. Okay. And then जब term sheet जब sign हुआ, so you're like, चलो ठीक है, अब तो मतलब it is confirmed, पैसे तो आ गए, पैसे तो आ ही जाएंगे अभी. So we then, and of course we had that 1 year time. So it was like towards the mid of 2008, and we had to move out. So we resigned, and we resigned in a very comfort, mentality कि इधर VC भी ready है, term sheet भी sign हो गया, business model is all done. So we are supposed to, start Platinum One as a financial distribution company across 5-6 cities, and then we scale it up from there. And resign kiya, and then immediately after, I think 15 days or 1 month, this was in June sometime, and July end or August sometime, that entire market crashed. So the economic crash in 2008, which is Merrill Lynch and Lehman, all those things happened. And then Sequoia called us up saying that, boss, unfortunately will not be able to go ahead now with this, क्योंकि अभी scenario change हो गया है. So and in fact, we were supposed to be the first, seed fund for Sequoia in India. They were primarily a private equity player at that point of time in 2008. They didn't even have an India fund, so they were supposed to, route the money from Mauritius or something. Of course, we didn't expect it and anticipated कि वो इतना लंबा चलेगा. That depression, economic depression and recession, whatever it was. Of course, no one knows that वो कितना चलने वाला है. So हमें लगा कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, मतलब, and that was the first time we saw a economic recession for the first time in our lifetime. We're not experienced to it, right? So we said कि हाँ, मतलब like temporary phase है, it will go over. So so we pulled in our fund and said कि let's एक काम करते हैं, अपना office कर लेते हैं बॉम्बे में. But incidentally what happened is, हमने जब resign कर दिया, and by that time all this happened, there was like good 4-5 months, okay, gap था. But what we did is, हम लोग religiously हर एक round robin में एक के घर पे used to run offices. Okay, so every day 9 o'clock हम लोग पहुंच जाते थे जिसके घर में होता था. So that guy has to arrange for food and everything. And 9 to 6 we used to do all brainstorming, सारा करते थे कौन क्या करेगा, planning everything. So we did it for 2-3 months. Okay, and we said कि नहीं हमें ना वो 9 to 6 वाला let's not break, otherwise घर पे बैठ जाएंगे तो फिर मतलब अलग मोड में चले जाएंगे. We ran that office at each of our house for good 2-3 months, and of course तब हमें था कि पैसा तो आ ही जाएगा Sequoia का, तब तक पूरा planning और बना रहे थे. So we did that. But yeah, so when so हमें लगा कि वो Sequoia का आने में थोड़ा time लगेगा. Before that what we did is, हमने decide किया कि एक काम करते हैं, अपना पहला office तो चालू कर लेते, कब तक घर से करेंगे, let's pull in our fund, and Bombay में let's start our first office, and when that fund come, then we will start the other locations. So हमने Bombay में we took a swanky office in Dadar, okay, next to the station. So we took a nice glass building, मस्त अपना interior को बुला के cabin बनाया, and it's a good 3,000 square feet big office, huge rent and all. Okay, that time it was like 3.5 lakh का rent था. उसके बाद सब करने के बाद that crash happened, and then Sequoia ने भी bye bye बोल दिया. So हमारी लग गई basically. So we thought कि चलो करते हैं, let's as I said that we didn't anticipate it कि इतना टाइम चलने वाला है, कि let's sail through it, अपना सेल करते हैं तो उससे आएगा, and then any which is possibly it will get scenarios will improve, and then the investor will come back. But it continued for good 2 years almost. Right? So what happened is that 2009 beginning,
तो हमारी ऐसे ही लगी पड़ी थी बिकॉज सेल्स कर रहे थे एंड देन दैट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड गोइंग आउट इन फील्ड along with the sales guy door to door इंश्योरेंस बेचना है तो it was B2C. Okay, I've never been to that B2C sales before, but that time I started my first B2C experience. So sales वाले RMs के साथ I used to go. So I did that for good 1 year, and then after 1 year our finances started drying up. जो भी हमारे reserves से started drying up. हाँ. uh, and then ICICI Prudential came up with an opportunity कि we are outsourcing some telecalling process, so do you guys want to look into it, take it up as an opportunity. तो हमारा ये था कि मरता क्या नहीं करता वाला हिसाब था कि कुछ तो हो नहीं रहा इधर, खर्चे हो रहे हैं. And by that time what happened is that the other office we have taken and we are paying that hefty rent. So we went and told our landlord कि boss we want to, so हमने decide किया कि वो office छोड़ के let's move to a smaller office, we don't need that big swanky office. तो लैंडलॉर्ड ने फिर हमें वो क्लॉज दिखाया एग्रीमेंट की 3 साल का लॉक इन है. सो ऑल ऑफ अस फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, हमें वो सब फंडा तब समझता नहीं था. जो भी एग्रीमेंट हमने साइन कर दिया कि पहला ऑफिस है, वी आर लाइक ऑन डिफरेंट क्लाउड नाइन दैट टाइम. तो तब हमें बताया कि बॉस ये तुम्हारा 3 साल का लॉक इन क्लॉज है, तो तुम छोड़ सकते हो, बट तुम्हारा जो डिपॉजिट है वो पूरा फोरफिट हो जाएगा. तो फिर हमारी लग गई कि बस मतलब तो ये ऑफिस भी नहीं छोड़ सकते, 3 लाख का रेंट हर महीने देना है. So we just took up that BPO opportunity from iPro कि चलो अपना कम से कम रेंट निकल जाएगा इस ऑफिस का. Okay. And then after spending 1 year in that swanky cabins glass office, we called a carpenter, सब तोड़वाया, वहाँ पे लंबा डेस्क लगाया बीपीओ के हिसाब से. So हर एक का केबिन, मतलब जो हमारा इंडिविजुअल केबिन था वहाँ पे 15-15 टेलीकॉलर बैठ गए. So that's how our and what happened is that our productivity was better than the other running BPOs who have taken up that process from iPro. Right. So because we understand the product, insurance हमें समझता था, so we changed the script. हमें पता था कि क्या customer को कैसे बोलना है, कैसे pitch करना है, and all those things. So we were doing much better than any other BPO whom iPro has outsourced. And gradually then the word spread out, and we started getting more business from other clients. Right. And एक साल बाद हमें फिर all of a sudden that 10 people process with which we started become 150 people process. Okay, so and that's how we moved into BPO, and Platinum One today is a listed BPO. We got it listed last year. So yeah, that's how it started. And then for we never had any external funding, no debt. It just happened by this internal Completely activity. bootstrap. Completely bootstrap, yeah. Wow. So this is very fascinating. आप लोगों ने जो क्लासिक एंटरप्रेन्योर जो मिस्टेक करता है वो सारी कर दी कि बड़ी ऑफिस ले लेंगे ये. हाँ अरे we did all of it, and we did all the so वो जब लिया and फिर जब हमें समझा that कि अब तो फंस गए टाइप. And then we did all what needs to be done to safeguard that, because we were very determined that we don't want to go back to the job. That is like very it's not the major thing of our determination, but we're determined to make this happen कि नहीं ये तो हमें करके दिखाना है. So fortunately all of us were of the same mindset. The good, I think, is very very important in an entrepreneurial journey if you are working in a partnership, is that all of us should be in the same wavelength and same philosophy, because थोड़ा बहुत एक दो इधर उधर होता है ना, तो फिर that's how the companies goes down, the partnerships break. हाँ, या एंड वो शिफ्ट आप लोगों के लिए यू सेड कि डिटरमाइंड रहना पड़ेगा, एंड यू आल्सो सेड अबाउट कि यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ मनी और वो, बट वो बहुत एक हार्ड शिफ्ट होता है ना, वो सडनली माइंड शिफ्ट को कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हर महीने की 1 तारीख को या तो फर्स्ट वीक को मेरी सैलरी आ जाने वाली है. यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मतलब सैलरी क्या, मेरा रेवेन्यू कितना बनने का, मेरा जो एक्सपेंस हो रहा है उसको रेवेन्यू मैच कर रहा है, उसके बाद मेरा प्रॉफिट और वो सब तो मैं देखूंगा. सो लाइक व्हाट वाज दैट माइंड शिफ्ट लाइक, कि फिर वो एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगा आप लोगों को, या तो फिर यू Then गाइस. also, it is very critical if you are being an entrepreneur now. There has to be a very strong purpose other than making money. Yeah, exactly. Okay. And I'll tell you what, like, we were 6 of us when we started Platinum One. And of course, not to say anything, negative or anything about my other, but 3 of my partners, they stepped out after 3-4 years when they realized that paisa nahi ban raha. Okay.
and not because they want to make money, but I think they were like, हाँ हमारा इतना EMI है, this is a lifestyle we want to have, we don't want to compromise and all those things. But of course they have their own logical need. Again, the the expectation of making money is not bad. Okay, हाँ that is, वो तो हर एक का रहता है. मतलब even though whatever I am doing, even in Purple Ribbon, which is a very social initiative, of course it's not an NGO. My purpose is to make money. I want to make a valuation of that yeah organization. I want to make enough wealth out of it. yeah But as I said, the purpose, the bigger purpose has to be something else than money. Money should be the outcome of it. If money is the purpose, then it is not long lasting. You can't sustain through the tough times. That what basically helps you to survive and stay afloat is that other purpose. Because right पैसा ना बनता नहीं है बिजनेस में, वो काफी बाद में बनता है, लगे रहने के बाद बनता है. So if your money is the prime purpose, फिर वो आप हाल छोड़ देते हो. I think हाँ where it says that 99% or 90% of the startups fail, where possibly the purpose is making money and not the other, the bigger purpose of solving some problem. ट्रू ट्रू दिस इज सो ट्रू क्योंकि जैसे आपने बोला मनी एक आउटकम ही है जो आपको ड्राइव करेगा अगर आपको सुबह उठ के आपका ड्राइव है कि पैसा बनाना है तो Hmm. वो वाला ड्राइव कुछ नहीं होगा बट अगर एक हायर पर्पस है कि इन पर्पल रिबन एज यू सेड कि द इम्पैक्ट इज कि कैंसर ट्रीटमेंट एक्सेसिबल करना है ये Yeah, right. देन देयर इज अ हायर पर्पस ऑफ कोर्स पैसे कमाने कैपिटलिस्टिक वे में ही मुझे बिजनेस चलाना है और करना है Absolutely. बट आई एम आल्सो इम्पैक्टिंग पीपल आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ह्यूज प्रॉब्लम में अभी प्लेटिनम वन को फिर आप बीपीओ एक पिवट आया आपने आपको अपॉर्चुनिटी मिली फ्रॉम आईसीआईसीआई देन यू पिवटेड टू बीपीओ सर्विसेज वॉइस सर्विसेज बट देन स्केलिंग अप में और क्या चैलेंजेस आए आप लोगों को कि जब स्केल करना था कि हाँ ठीक है चलो ये पिवट अच्छा चल रहा है यहाँ से धंधा बन सकता है आप लोगों ने देख लिया देयर इज अ मार्केट वेयर वी कैन गो एंड वी कैन ग्रो आवर बिजनेस फिर देन स्केल करने में और दिक्कतें क्या आई आप लोगों को Kind of people that come to us for job in a BPO are guys who are in the range age group of 20 to 25, and they come from a lower middle class background mostly. Okay, and these are people who are mostly supporting their family. They are the main breadwinners in the family. Okay, when you realize that, okay, you are more than running a business which is like with the objective of. तो पहले हमारा ऐसा नहीं था honestly. The purpose was the when we went into the business, जब शुरू किया, it was making money. Okay, so we didn't had a purpose at that point of time कि अच्छा हमें ये लोगों को ज्ञान देना है, कैसे पैसे financial planning करना है and all those things. Like, let's create wealth. Okay, and be our own boss. So these are the two different, two very clear cut thoughts in our mind when we got into it, कि अपना खुद का डिसीजन, मतलब खुद का बॉस बनना है और पैसे बनाने हैं. But during the journey we realized that we are actually supporting 100 families or 150 families. Okay, so that became like a very different purpose, which we realized, as I said, once the company started, when we so हाँ right right and then now we are going to take on purple ribbon आर यू सॉल्विंग योर ओन प्रॉब्लम क्या आपका पेन पॉइंट था ये चीज आपने देखा आप गुजरे यहाँ से या तो फिर यू सॉ ह्यूज मार्केट गैप एंड तब डिसाइडेड कि यहाँ पे कुछ कर सकते हैं So, also that's a interesting transition that has happened, from solving my own problem to, to get into a cancer care. So, fortunately, cancer has never been in my family, so it is not a problem that I started with initially. Okay, my journey in the healthcare space started 4 years back. I basically started a startup called Care Off. Okay, so that was my ओके first startup in the healthcare space, which I started in 2018. Okay, and that was to solve my own problem. Oh, okay, 2017 and में शुरू किया था. And the problem was primarily my parents were in Calcutta and I was here. So me and my brother both are settled in Mumbai now, and my parents were in Calcutta. Now they have shifted here. But क्या होता था कि being a senior citizen staying alone in that city, I realized that they are not tech savvy, of course, like any other senior citizen, most of them in that age group. My dad is now 75, mom is 70, so they're not tech savvy, but they're very active. Okay, so
कुछ भी चीजों के लिए ना, दे विल स्टिल लाइक, अगर उनको कहीं जाना है ट्रेन से, माय डैड विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 साढ़े 4 बजे, गो टू द रेलवे स्टेशन. आई रिमेम्बर इन माय स्कूल डेज और कॉलेज डेज टू डू दैट, कि टिकट काउंटर में जाके लाइन में खड़े हो जाओ. हाँ. ओके, एंड जैसे टिकट काउंटर खुलेगा, सो देन यू गेट द फॉर्म, फिल अप एंड टिकट. सो ऑफलाइन मोड ऑफ डूइंग थिंग्स. सो कहीं कहीं लोकली विद इन द सिटी इफ दे ट्रैवल, दे विल गो थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ओला उबर, बिकॉज यू नीड एन ऐप टू डू इट, राइट? हाँ. And most of these platforms, whether it is, Ola, Uber, Book My Show, Make My Trip, IRCTC, they don't have a call center support, right? So I realized, since I run a call center, can I create a bridge, okay, between the senior citizens and the technology? So let them, whatever they need on the tech side of it, or the services which are, which are given to them through technology, तो फोन करे और मैं करके देता हूँ. द कॉल सेंटर विल सॉल्व दैट, विल बुक दैट ओला फॉर देम, or the हाँ. call center will book grocery from big basket for them. हाँ. हाँ. So that's how the, my entry. So I started a home healthcare service, or a concierge service. But what I also did along with it, I thought कि यार, so I started a monthly membership program, कि साल में, महीने में आप 1,000 रुपए दो and you get access to all this concierge service. बट विद इन 1,000 रुपए मुझे लगा कि यार, ये 1,000 रुपए मांगूंगा तो मतलब इंडियन कंज्यूमर्स है, फिर वो खाली फोन करने के लिए दे विल नॉट गिव मी 1,000 रुपीज. हाँ. तो आई क्लब्ड इन अ हेल्थ केयर, चेकअप, लाइक, महीने में, हर महीने एक एमबीबीएस डॉक्टर आपके घर पे आएगा, और हस्बैंड वाइफ या मॉम डैड दोनों का रेगुलर चेकअप करेगा, महीने में एक बार आके, हर महीने दे विल डू अ वाइटल चेकअप, कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, बीपी, प्रेशर, ये वो वगैरह वगैरह. एंड आई देन स्टार्टेड डूइंग द मार्केटिंग, कि अच्छा, नाउ आई नीड टू एनरोल पीपल फॉर दिस. ओके, तो सुबह वो जॉगर्स पार्क में बुड्ढे बुड्ढे सारे वो वॉक करते थे, हा हा हो, दे विल हैव लाफिंग क्लब एंड ऑल्सो, सो आई सेंड माई पीपल देयर, कि जाके करके आओ ये सारा लीफलेटिंग की. सो नो वन टुक अ सब्सक्रिप्शन, किसी ने, मतलब, बाय द एंड ऑफ 6 months आई रियलाइज वी हैड ओनली 11 सब्सक्राइबर्स. Okay. Oh. So, and the challenge is that all these people, or the guys who are like my generation, staying in Mumbai and working here, and their parents are in Kolkata, तो उनको बोला, जैसे कि आप एक काम करो, ये ना मेरा डैड का नंबर है, आप उनसे बात कर लो. सो देन आई यूज्ड टू कॉल अप देयर डैड हु इज इन कोलकाता, कि अंकल, मैं बोल रहा हूँ, इसने मुझे आपके बेटे ने नंबर दिया, हमसे बात हुई है, दिस इज सर्विस यू आर डूइंग, सो वुड यू लाइक टू एनरोल. तो दो गाली के बाद रख दी, किसने बोला हमें चाहिए ऐसा करके, आप उसको, मेरे बेटे को बोलो वही ले ले ये सर्विस. So realization that happened to me is, the sons or the kids who are working here are not the decision maker. They are possibly, they are influential. Okay, the decision makers are the parents, right? And they don't want this service. So what I then did is that I went again, back to those old people, senior citizens, and then asked them, कि boss आपको चाहिए क्या? Why you are not taking it? And the answer I got is very different than what I assumed is a problem. So that's why, it is said classically that, काफी बार, जो प्रोडक्ट बनाता है वो अपने ख्यालों में रहता है कि ये मैंने बहुत, तोप अच्छा. बनाया है, हाँ. चेंज कर देगा पूरा वर्ल्ड, but there is no demand of it. Okay. And that's a classic case which happened with me. So when I went to this senior citizens and asked that, boss, this is what I'm giving you as a service. Those are services I needed, not my parents needed. Okay. So when it happened, when I actually went back to them and said that आपको चाहिए, they said, boss, we are retired people. हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है. हमें वो फोन रिचार्ज करने का is my, hobby, is my past time. मुझे वो घर से निकलने का बहाना है वो. तो तुम वो भी अगर घर बैठ के कराओगे तो फिर मैं करूंगा क्या? हाँ. सो Exist. मुझे वो टिकट, मूवी का टिकट खरीदना, आई वांट टू गो, हाफ एन आवर 1 आवर बिफोर, वहां पे जाके मैं चाय के टपरी से चाय पीऊंगा, लाइन में खड़ा रहूंगा, दो और लोग बुड्ढे मिलेंगे, उनसे थोड़ी गप्पे मारूंगा. तो दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. मुझे वो मेक, तुम बुक माई शो में टिकट खरीद के मोबाइल में भेज सको, मुझे नहीं चाहिए वैसा, बिकॉज हाँ. दैट इज जस्ट अ बहाना फॉर मी टू गो आउट. And हाँ. that's when I realized that, boss, I'm not solving the problem. Okay, I'm just, assume that this is a problem, and created a solution around it. Okay. Oh. So then they said that, can you give us, a reliable healthcare? हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि हॉस्पिटल जाते हैं ना तो पेरिनियली वो लोग कुछ ना कुछ बहाने एडमिट कर लेंगे और टेस्ट पे टेस्ट डालते हैं. एंड सो कैन यू गिव अस अ रिलायबल हेल्थ केयर एट होम? जो आप ये सब कर रहे हो उसके जगह पे आप हेल्थ केयर दे सकते हो क्या घर पे? And that's when the entire, the my thought and the entire, the model evolved to provide healthcare at home. I ran that home healthcare for 1 year, 1.5 year again. वो भी नहीं चला.
Okay, because वहाँ पे फिर क्या हुआ, the challenge happened is then the decision maker shifted from the old age people or the senior citizens to the sons, because the moment somebody वो उनके parent को घर पे nurse या caregiver चाहिए, the decisions were done by the son कि मुझे nurse लेना है या आया लेना है, कौन से nurse लेना है, आया लेना है, right? So then the challenge happened is Indian consumers are very price sensitive, generally. So वहाँ पे I realized that the challenge that or the competition that I faced is not from the other home healthcare companies like Portia, Healthcare at Home and all. The challenge I was facing from Just Dial listed all the IA bureaus and nursing bureaus. So that in fact, to the extent, unfortunately, one of my friend, मुझे मजाक मजाक में बताया कि रातुल तू ना पेरेंट्स को केटर करके मत कर कुछ, यू ट्राई समथिंग फॉर द किड्स, उनके बच्चे को केटर करके कर some service, तो वो आंख बंद करके पैसा देंगे तब, but parents के लिए no one pays. That's somebody told me in irony, in a humorous way, but I think that's to an extent is true, is my realization. Yeah, yeah. But what happened is, but in that 1.5 year of stint in my home healthcare, I realized that there are some patients I got which are cancer patients. Okay, and there I felt that the family needed a good caregiver, a quality caregiver. They really wanted to know कि अच्छा आपके बंदे को सब पता है कि नहीं, is he technically qualified, trained है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, bed sore का handle करे. So multiple things. The need was more long term. So I realized that there is a good mix of business जहाँ पे, because normally जो healthcare जो caregiver and nurses customer पूछते थे कि समझो किसी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद 7 दिन के लिए उनको एक केयर गिवर चाहिए साथ में रहने के लिए, रिहैब टाइम, दोज वर देयर इन द बिजनेस वाज देयर फॉर 7 to 10 days, 7-10 दिन के लिए उनको नर्स या केयर गिवर चाहिए. बट इन केस ऑफ कैंसर पेशेंट यू नीड फॉर लाइफ, उसको 3 महीना 6 महीना साल भर के लिए चाहिए. I realized, let me create a specialized home care for cancer patients only and not do for general. Okay. And there's no one who's doing this, like, because there were too many places. So also what happened is that I went to some VCs for funding. तो VC ने भी मुझे पूछा कि यार ये पोटिया हेल्थ केयर एट होम दे आर बिग डैडीज, आप अलग क्या कर रहे हो? आई डिडंट हैड एनी आंसर, क्योंकि मैं भी सेम चीज ही कर रहा हूँ जो वो लोग कर रहे हैं. हाँ. So still I was focusing on home care for cancer patients. बट उसमें देन आई स्टार्टेड डूइंग होमवर्क कि अच्छा, सो लेट मी अंडरस्टैंड द कैंसर डोमेन कंप्लीटली. अगर मुझे इसी में करना है तो मुझे पूरा कैंसर वाला एरिया समझना पड़ेगा. एंड आई डोंट कम फ्रॉम अ मेडिकल, आई डोंट हैव अ मेडिकल बैकग्राउंड, नीदर आई हैव वर्कड इन एनी हेल्थ केयर और pharma background ever. My own mommy, okay, so she was in a different state, district in West Bengal, which is around like 200 to 250 kilometer away from Calcutta. हाँ. तो उनको कीमो बताया गया था करने के लिए, एंड my mama was retired, so he says कि एक तो मैं हर कीमो साइकिल लाइक 30-40 thousand रुपीज, मेरे पेंशन ही 20,000 की है, तो मेरा तो सेविंग जीरो हो जाएगा. ओके, मैं खींच नहीं पाऊंगा इतना. सेकंड इज दैट वो जहाँ पे रहते थे वहां से वो ट्रेन से 3 घंटा जाना एवरी मंथ फॉर कीमो इज नॉट पॉसिबल. तो ही स्टॉप डूइंग द कीमो मिडवे, शिफ्टेड टू अ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लोकली कहीं, तो उनको बोला कि इससे ठीक हो जाएगा. And my mommy expired unfortunately within 3-4 months of stopping the chemo. Okay, so that was somewhere behind my mind. So so when I was doing this homework of understanding the cancer domain, तब मुझे कीमो का ये एंगल समझा कि there is a huge margin in the chemo drugs. So the chemo medicine which is costing say 10,000 rupees example, as an MRP, is actually available at 1,500, 2,000, 2,500 kind of a rupee. That was a very big, like changing, defining moment for me कि मुझे लगा यार एक एंड पे बेचारे दे कांट अफोर्ड ट्रीटमेंट एंड रोक देते हैं, एंड यहाँ पे this kind of a humongous margin which is insane. That's when I realized that okay, so I need to stop everything and focus on chemotherapy. Okay, so that's how Purple Ribbon came into place. Wow, this is nice. You are solving a very noble problem. अभी मुझे ये बिजनेस साइड से मुझे आपसे ये पूछना है कि ये तो है उनका पेन पॉइंट है, ये दे रहे हो, बट ऑपरेशनली क्या चैलेंजेस आ रहा है आपको बिजनेस को अभी बढ़ाने में? ऑपरेशंस के चैलेंजेस क्या है इस बिजनेस में? I think it's a huge challenge of and it's a vicious cycle if I say so. Um, but I'll tell you a very interesting fact. जितने startups हैं ना इंडिया में healthcare में, 80% of the startups are not from the healthcare side. The founders are not from healthcare. They are tech guys, engineers, and they're trying to solve a problem because is it is easy to solve a problem if you have a user lens.
right? Then you get to see the problem clearly, and you know how to solve it, because you are on the you've gone through it, you have seen the pain, you know where the pain is. I went with a hypothesis that let me create a patient centric business model. Okay, let me be on the patient's, उसके patient को जो problem आ रहा है वो मैं solve करता हूँ. Okay, so my center of attraction or center of the point was patient, कि patient को ये तकलीफ है, this is how what I'm trying to solve. And that's how I created. So I started my pilot in Mumbai. So I have what I did is that my model is more like Oyo. So what we do is that I tie up with small nursing homes. उनके सब 10 बेड 15 बेड वाले बहुत सारे नर्सिंग होम है नेबरहुड में. So I went to them, said कि सर मुझे 2 बेड चाहिए रेंट पे, एंड नर्सेज मेरी होंगी. So हम लोग जो ये एरिया के पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स होंगे, उनको यहाँ पे लाके हम कीमो देंगे. So the proposition for the patient is that you don't have to travel for getting a chemo. आपके घर के पास वाले नर्सिंग होम में आ जाओ, वहां पे आपका कीमो हो जाएगा. Okay, and with a trained nurse will come here and give the chemo. So that was the proposition. And then I went to all the doctors. So जब ये नेटवर्क खड़ा किया मैंने बॉम्बे में 18-20 नर्सिंग होम के साथ टाई अप कर लिया, and then I started approaching the oncologist or the doctors in Mumbai saying that boss, I have 18 daycare centers. Okay, मेरे पास 5 trained nurses हैं, and we can give chemotherapy close to the patient's home. तो आपके जो patients समझो दूर से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, उनको आप रेफर करो उनके घर के पास वाले ट्रीटमेंट में. सो आई डोंट हैव एन ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर आप ही रहोगे, मैं खाली उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन इज व्हाट आई विल टेक केयर, without compromising the quality and everything. So most of the doctors said very good idea, noble cause, this is the need and all those things. एक डॉक्टर ने पेशेंट नहीं रेफर किया. So not a single doctor referred any single patient, because eventually I realized that they consider me as a threat because उनका revenue खत्म हो रहा है. Exactly. The first challenge is that if you have to do something in India in the healthcare space specifically, you have to be part of the ecosystem. So I cannot make a model which is patient centric, and which I think to an extent was my understanding mistake. So मुझे now I am trying to create a model and I'm pivoting the model to make it more doctor centric. So let me either कि patient का प्रॉब्लम तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले डॉक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बिकॉज अगर मैंने वो नहीं किया तो मुझे पेशेंट का एक्सेस ही नहीं मिल रहा है. आई एम नॉट बीन एबल टू रीच. ओके, सो एंड इंडिया में कैसा है कि इट इज स्टिल, आई मीन स्पेसिफिकली नॉट अबाउट इंडिया, इट्स इन अ केस लाइक कैंसर, पेशेंट डॉक्टर का ही सुनेगा चाहे कुछ भी हो जाए. हाँ, क्योंकि बहुत थिन लाइन है ना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ऑफ लाइफ है. आप ड्रेसिंग कराने जाओगे ठीक है, चलो बहुत कुछ होगा नहीं, बट यहाँ पे रिस्क ऑफ लूजिंग अ लाइफ. सो So in fact, one of the doctors, senior doctor, once told me this, in a very light mood, कि Ratul, in any other, I mean, you would have seen, and pardon me, I don't possibly want to say this in public forum, but there's a realization. Okay, so this ki काफी cases में you would have seen that वो patient family आके डॉक्टर्स को पीट देते हैं, मार देते हैं, समथिंग गोज रॉन्ग, हॉस्पिटल में आके तोड़ फोड़ करते हैं. इन केस ऑफ कैंसर इट हार्डली हैपेंस. ओके, सो एंड यहाँ पे ऑल द मोर पेशेंट डाइज बिकॉज इट इज इनएविटेबल. सो इन केस ऑफ कैंसर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फैमिली एंड द पेशेंट इज नॉट दैट कि मैं उसको क्योर कर दूं. उसका एक्सपेक्टेशन है कि उसको और कुछ दिनों की मैं मोहलत दे दूं. Can I make him survive for a few more months, few more years, etc. So because उसका expectation is very clear कि that he is not going to survive. So that's how it is. I mean that's a very hard hitting statement, which is true. That's a very hard hitting statement that so that is the level of emotional challenge that the family and patient goes through कि यार कुछ दिन और जिंदा रहना है type. True, I totally agree with this because मेरी जो दादी है उनके साथ ये सेम है कि इट इज लाइक कि नॉन क्योरेबल है. इट्स जस्ट कि डॉक्टर हेल्प कर रहे हैं कि और ज्यादा 1 साल 1.5 साल या उतने साल तक वो जिंदा रहे, या तो फिर फॉर मंथ्स और ऐसा कुछ. और एटलीस्ट जब तक जिंदा रहे तब तक और उनको पेन बढ़े ना, मतलब एटलीस्ट वो स्टेटस. एटलीस्ट हाँ. When I started Purple Ribbon 2 years back, my tagline is that creating an affordable and accessible chemo daycare network. Okay,
Now I have removed affordability word. Now I say that creating an accessible network basically. So I'm now driving the USP of accessibility. Affordability बाद में देखेंगे. मुझे ये भी पूछना है कि advertising like awareness is the right word. Awareness around cancer is very low. हम लोग tier 1 tier 2 सिटी में रहते हैं, still है, लोगों को सिर्फ 2% कैंसर पता है. Correct. क्योंकि I have interacted with so many patients, इतने मिसकंसेप्शन उनके बारे में. और कैंसर में ये भी है ना, पीपल आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट इट ओपनली. अगर Yeah. ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर बताने में उनको सोसाइटी में Stigma है. बहुत बहुत Social बड़ा stigma. बहुत बड़ा स्टिग्मा है. तो आई थिंक वो कैंसर मेन स्ट्रीम डिजीज बन गया है, बट मेन स्ट्रीम अवेयरनेस डिजीज नहीं बनता. तो एडवर्टाइजिंग अवेयरनेस में क्या चेंजेस आने चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर कस्टमर भी अवेयर होगा, जैसे कि कोई भी पेशेंट अवेयर होगा, तो इट विल फोर्स आल्सो और डॉक्टर्स आल्सो टू कि कुछ सोल्यूशन लाना पड़ेगा हम लोगों को भी, क्योंकि ये लोग अवेयर होंगे तो ये लोग इनकी जो फॉल्टरी अभी जो चल रही है वो भी पकड़ लेंगे. So, I have a very, philosophical thought and a holistic thought on this, on the way awareness should be there. I think nothing works if it is driven by fear. Okay. I think हमारे जितने कैंसर के अवेयरनेस है ना, वो सिगरेट का बॉक्स खरीदोगे या मूवी देखने जाओगे, एक गंदा भयानक सा फोटो रहता है उसमें, मतलब आई लिटरली लाइक क्लोज माय आईज कि यार ये चला जाए पोर्शन, थिएटर में जाओ, तंबाकू गुटखा कैंसर का, so I think it I somehow feel people need motivation, to work. They don't, I don't believe, I mean, I am of a philosophy which believes that, motivation and positivity which drives people, and not the fear and danda. Okay, I think the entire awareness and advertisements, whatever happens, is the danda approach. कि वो सिगरेट के ऊपर एक गंदा सा फोटो लगा दो ओरल कैंसर का, तो लोग नहीं, घंटा फर्क पड़ता है. पीपल आर लाइक गोइंग एंड स्टिल स्मोकिंग. स्मोकिंग. So I think it has to be given a positive twist, and the positive twist is that it is curable. पोलियो का क्या हुआ, लोगों ने बोला कि पोलियो का टीका लगेगा तो पोलियो नहीं होगा, right? So I think that angle is completely missing from all our communications, that if you do an early screening and early detection is completely curable. No one talks about it. अभी ये डराते रहते कि यार तुम सिगरेट गुटखा तंबाकू करोगे तो फिर ओरल कैंसर होगा और ऐसे भयानक मौत होगी करके. बट बॉस वो छोड़ो ना, उसका वो हैबिट है, यू कांट बट कैन यू गेट हिम इनटू एन अर्ली स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, कि वो कैन यू गेट इनटू एन एनुअल स्क्रीनिंग मोड. आप हेल्थ चेकअप कराते हो उसमें कैंसर का कराओ ना. Breast cancer, if you look at it, I mean today, I mean if I just tell you the stats, cancer is I mean whether you know it or not, cancer today is the second largest disease in India, and by next year it is going to be the largest disease. Okay. So if you look at the actual number today, by far cancer is the largest disease in India. Okay. 100%. But just by reported number, it is the second largest disease, which is just the tip of the iceberg. And within that, within all the type of cancer, breast cancer is the largest cancer type. So imagine क्या हमारा हालत है यहाँ पे इंडिया में. Now the myth is like normally they say कि 40 साल के बाद आपको रेगुलर कोई भी आप इवन इन टियर 1 सिटीज मेट्रोज में जाके बात करो, उनका ये मानना है and वो ये जानते हैं कि 40 आफ्टर द एज ऑफ 40 वी नीड टू गेट इनटू अ रेगुलर स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, मैमोग्राफी रेगुलर हर साल कराना है. बट बॉस द स्टैट्स दिस आल्सो सेज दिस कि 40 साल की उम्र में जो लोग जाके टेस्ट कराते हैं जिनका कैंसर डिटेक्ट होता है, 45% of them are already reached stage 3. Okay, which essentially means they have got cancer at the age of 25 to 30. They are not getting cancer at the age of 40. So आप क्यों उसको बोलते हो कि 40 से जाके फिर आप स्क्रीनिंग कराओ, 25 से स्क्रीनिंग कराओ ना. तो उस स्टेज में जब डिटेक्ट होगा, it is completely curable. You don't need to go for like operation of your breast. Right. This is true. You are on right track. I think आप और डीप जाओगे, जैसे जैसे वो डॉक्टर्स वाला मार्केट समझोगे, यहाँ पे पेशेंट्स के और कैसे ड्राइव भी बढ़ेगी इंडिया के अंदर. पिवट आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी करोगे.
but what you are doing right now with Purple Ribbon is totally commendable. But kudos to you. I hope कि you find solutions, you find ways to scale up this business. Thank you. जितना भी हो जाए, और जब भी पड़ेगा आगे जाके ऐसा होगा तो हम लोग वापस से एक बार एक साल के बाद या तो फिर 6-7 months के बाद हम लोग वापस से एक पॉडकास्ट करेंगे just about Definitely. the growth. Lastly, I think I want to give to your users one, last advice, because as you said that they are primarily that youth of today, 20 to 25 years. हाँ तो मुझे ना एक डॉक्टर ने बोला था, कि रातुल, and he's a, mid-level oncologist. He has told me 2 years back that, तेरा मॉडल चलेगा नहीं, it will fail. So I only made one comment that day कि sir, अभी तो मैंने एग्जाम भी नहीं दिया. How are you declaring the result? Okay, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ. So, and then today, this doctor is my greatest supporter and is saying कि, to fundraise करेगा ना, I want to come as a medical director. So, my advice to the entire listener here and the youth is don't give up. लोग चाहे कुछ भी बोले. If you have a strong determination and passion, just follow it blindly. Right. No one can fail you till you fail. Right. मेरा last question यही था आपके लिए कि what is the one advice you want to give to budding entrepreneur and what is the one advice they should completely ignore? Thank you so much, Ratul. I had a really great time and I hope कि हमारे audience को पसंद आया होगा. आपकी जो journey थी from your starting days to building Platinum 1 to वो काफी interesting stories थी बीच के अंदर. मुझे तो बहुत मजा आ गया. So that's the end of this episode, guys. I hope रतुल ने जो learning share की है अपनी, उन्होंने जो अपनी life journey share की है, उससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा. और अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो then please drop a like, share this video with your friends and comment down your 3 learnings from it. And lastly, don't forget to subscribe to our channel and hit that notification bell to never miss an update from our channel. Thank you so much.